Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So today we'll cover daily current affairs quiz for 24th July 2023. So let's start with the first question. So the first question is regarding Tankai method. So which of the following statements about Tankai method is incorrect? Okay, we have to identify the incorrect statement here. So the first statement says the Tankai method is a 2000-year-old shipbuilding technique. Next statement, ships constructed using Tankai method are more susceptible to damage from shoals and sandbars due to the stitching of wooden planks. Next statement, Indian Navy signed an agreement with the Ministry of Culture to revive the Tankai method and implement it in the construction of future warships. Next statement, Tankai method involves stitching wooden planks together to construct ships instead of using traditional nails. Okay, so here statement 1 is wrong because the ships constructed using Tankai method are less susceptible to the damage and they have more flexibility and more durability. That's why statement 2 is incorrect. Okay, so the correct answer to this question would be B. Okay, as you can see in the diagram here, this is the traditional ship built by this particular technique. It is also known as stitched shipbuilding method, and here is this MOU being signed between Ministry of Culture and Indian Navy. So here ships constructed, second statement is incorrect because ships constructed using Tankai method are less susceptible to damage from shoals and sandbars due to the stitching of wooden planks, which may not provide the same level of reinforcement as traditional methods. Okay, so let's see the next question. Next question is regarding Women's Empowerment Index, which was released recently, and the question is asking the incorrect statement regarding Women Empowerment Index. So first statement says it is a comprehensive index jointly developed by UN Women and UNDP, that is United Nations Development Program. Second statement says it considers 5 key aspects crucial for women's progress, including education and skill building. Third statement, WEI serves as a tool for measuring women's empowerment in a single dimension. Okay, next statement, WEI is instrumental in monitoring progress towards achieving SDG 5 on gender equality. Okay, so here statement C is wrong because any index cannot measure women's empowerment in just a single dimension. So this single dimension thing is wrong for this statement. Let's see the description part, you will get better idea. So here statement 3 is incorrect and correct answer is C, and it does not measure the women's empowerment in a single direction but captures multiple dimensions. It includes life and good health, education, skill building and knowledge, labor and financial inclusion, and participation in decision making, and freedom from violence. You can see refer to this table here. So these are the 5 important dimensions in which women empowerment is being measured, and with respect to these 5 dimensions, 5 different indexes are being developed. Okay, life and good health index, education, skill building and knowledge index, next labor and financial inclusion index, next is participation in decision making index, and next is freedom from violence index. तो इन पांचों dimensions का अलग अलग index निकालते हैं, and then they come up with the women's empowerment index. You have to tell in the comment section what is the rank of India in present in this year's women empowerment index. Also we can you can have a look at life and good health. इसमें और कौन कौन से aspect ये measure करते हैं? They measure modern methods of contraception. Next, adolescent birth rate. In the education, they measure the female population with completed secondary education or higher, and female youth not in education, employment or training. Labor and financial inclusion में they measure the female labor force participation rate, and female फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप, कितने फीमेल्स के पास खुद का बैंक अकाउंट है, ये चीज़ मेजर करते हैं. नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग कैसे मेजर करते हैं, पार्लियामेंट में कितनी सीट है. नेक्स्ट, लोकल गवर्नमेंट में कितनी सीट है, शेयर ऑफ द सीट्स, एंड देन शेयर ऑफ मैनेजरियल पोजीशन हेल्ड बाय वुमेन इन वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस प्रिवलेंस अमंग द
एवर पार्टनर्ड वेमेन एंड गर्ल्स, मतलब उनके डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली उनका पार्टनर उनके ऊपर कितना वायलेंस कर रहा है उस चीज़ को ये मेजर करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट वेमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ universal basic income? First statement says universality, that is it should be given to all the citizens, all citizens should be included. Next statement, unconditionality, no prior condition should be kept before providing universal basic income. This is what second criteria says about. Third is periodic payments, payment at regular intervals, either monthly or weekly or maybe bi-monthly, whatever is decided, payment should be made at regular intervals. Finally, payments in cash payment should be done, no food vouchers or any service coupon is provided. So they should have the flexibility to spend in whatever area they want to spend. Okay, so these are the important four features, and all of them are correct. Okay, so let's see the description part. This will become more clear to you. First of all, why this particular issue was in news? Rajasthan Assembly recently has passed the Rajasthan Minimum Guaranteed Income Bill 2023, a historic law to guarantee wages or pension for the entire adult population of the state. तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली वो लेके आ गए हैं, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है. एंड दिस बिल कवर्स बोथ अर्बन एंड द रूरल फैमिलीज एंड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड मिनिमम पेंशन. ओके, so this is a legendary program. And what do you mean by universal basic income? It is a program that provides all citizens of a geographic area विद अ गिवन सम ऑफ मनी. ठीक है, सबको एक बेसिक मिनिमम पैसा प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, चाहे वो नौकरी में हो या ना हो, चाहे उसके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, चाहे उसकी इनकम ज़्यादा हो या ना हो. इट विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन हु ऑल आर बीइंग गिवन यूबीआई अक्रॉस द वर्ल्ड. व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अलास्का परमानेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑयल रेवेन्यूज़ टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑन पर कैपिटा बेसिस. तो यूएस में ये इस बेसिस पे हो रहा है कि स्टेट के ऑयल का रेवेन्यू हर एक सिटीज़न के साथ शेयर होता है इन अलास्का परमानेंट फंड. नेक्स्ट इज स्टॉकटन कैलिफोर्निया में. हेयर secured funding from private non-profits to launch a small project with 100 participants receiving $500 per month for about 18 months. तो एक पायलट प्रोजेक्ट चला था इन कैलिफोर्निया. Finland has started a scheme in 2017 to pay 2,000 jobless people assistance of 560 euros a month, but it was stopped last year. Okay, in 2022 it was stopped. Next, in Kenya, largest experiment is underway with some villages receiving $0.50 or $1 per day. Okay, Brazil has also practiced certain experiments. Canada in Ontario has is planning to provide this particular basic income scheme. Next, France, a Senate committee has recommended an experiment, but still nothing concrete has been started. UK and Germany, studies have been conducted. Scotland, it has committed, but still experiment is yet to happen. Barcelona, British Columbia में start होना है experiment. And in Switzerland again, जो राइट टू बेसिक इनकम पहले आया था, ये प्लान आया था, बट इट वॉज डिफीटेड इन 2016. सो एज ऑफ नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर हैज़ नॉट बीन वेरी कंक्रीट रिगार्डिंग दिस. हमारे यहाँ राजस्थान में ये बिल आ चुका है. लेट्स सी हाउ सक्सेसफुल इट गेट्स. अदरवाइज आपको ट्रैक्शन तो मिल ही रहा है. आई मीन दे आर गेटिंग सो मच ऑफ पॉपुलरिटी विद दिस पॉपुलिस्ट मूव. ओके, एंड देन व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स जिस पे हमने क्वेश्चन बनाया था? फर्स्ट इज यूनिवर्सैलिटी, ऑल द सिटीजन्स विल बी कवर्ड. Unconditionality, without any condition money will be provided to you, okay, to all the citizens without any requirements like means testing or work requirements. ठीक है. Next is payment at regular intervals, either monthly or quarterly or whatever, in whatever way you want to provide, you have to make it periodic. Next, पेमेंट्स इन कैश, नो फूड वाउचर्स या सर्विस कूपन्स, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में आप नहीं प्रोवाइड करोगे. यू विल बी प्रोवाइडिंग डायरेक्ट मनी टू यूज़ सो दैट दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज़ इट द वे दे वांट टू यूज़ इट. ओके, so there are pros and cons of this particular move, but still it is in news because a bill has been introduced in Rajasthan Assembly. Next question is regarding heat domes and anticyclones. Okay, which of the following statements are correct? How many statements are correct? So first statement says heat domes and anticyclones are responsible for the occurrence of heat waves in several parts of the world.
Next statement, heat domes and anticyclone occur due to climate change. Next statement is about El Nino conditions exacerbate, means it increases the extreme heat around the world. So in this question, in this question, only two statements are correct. One is this, and 1 and 3. Second is wrong because heat domes and anticyclone do not solely occur because of climate change. Climate change definitely aggravates these conditions, but the cause of occurring of these geographical phenomena is different. Let's see the description part, which will make it more clear to you. So the correct answer for this question is only 2, that is B. Then statement 1 is correct. Why? Heat waves, सबसे पहले देख लेते हैं कि what is heat domes. Heat domes are the areas of high pressure that trap warm air for extended periods, causing prolonged heat waves. तो basically warm air को trap कर लेते हैं ये लोग, this phenomenon, and this leads to here is this particular thing being explained in detail. It occurs when the atmosphere traps hot ocean air like a lid or a cap. ठीक है, पूरा कवर कर लिया उसने. ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में. एंड इन समर जेट स्ट्रीम शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है जेट स्ट्रीम. हॉट एंड स्टेगनेंट एयर एक्सपेंड्स अपवर्ड्स. स्ट्रॉन्ग एंड हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंबाइंड विद इन्फ्लुएंसेस लाइक ला नीना act like a dome or a cap. So it kinds of create this particular dome. In a process known as convection, hot air attempts to escape but high pressure pushes it back down. ठीक है, जो हॉट एयर है वो बाहर निकलना चाहती है, बट इतना ज़्यादा प्रेशर है ऊपर यहाँ पे कि जो एयर है ना वो सबसाइड ही कर जाती है, नीचे ही रह जाती है. अंडर द डोम एयर सिंक्स एंड कंप्रेसेस रिलीजिंग मोर हीट. जितना वो कंप्रेस होगी उतना उसका प्रेशर राइज करेगा एंड इट विल रिलीज मोर हीट. एज द विंड्स move the hot air east, the jet streams trap the air where it sinks and resulting in higher amount of heat waves. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ये जो है ज़्यादा डार्कर हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. द हॉटर द टेम्परेचर इज़ द स्ट्रॉन्गर द हीट डोम गेट्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा हीट डोम बन रहा है उतना ज़्यादा हॉट एयर बनेगा. ठीक है, रिसेंटली दिल्ली में भी sometimes or maybe in North India you will feel the conditions like these कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीट डोम्स. एंड व्हाट इज़ एंटी साइक्लोन्स और हाई प्रेशर सिस्टम्स. सो हेयर इज़ दिस एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विच इज़ अपोजिट टू द साइक्लोनिक कंडीशन. यहाँ साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है कि सरफेस ऑफ द एयर पे कन्वर्जिंग एयर आएगी एंड लो प्रेशर विल बी देयर एंड सो द बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एयर विल राइज अबव. बट इन केस ऑफ एंटी साइक्लोन कंडीशन जो ऊपर ज़्यादा एयर थी इट विल सबसाइड डाउन, सो क्रिएटिंग हाई प्रेशर नियर द सरफेस. डाइवर्जिंग एयर मतलब एयर पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. सो दिस इज़ द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन. It results in descending warm air that leads to dry or hot weather conditions. So both of these are leading to the extreme weather condition in certain areas and creating heat waves are becoming more common and severe in various regions worldwide, raising concerns about underlying causes and implication for climate change. ठीक है, तो these are the contributing factors. तो statement 1 is correct. Statement 2 is not correct. Why? Because heat domes and cyclone do not occur because of climate change. They have, however, their occurrence and they are becoming more intense and for longer duration because of the climate change. But इनका main reason यहाँ पे हमने अभी discuss कर लिया. Statement 3, El Nino condition can greatly increase the likelihood of breaking temperature records and triggering more extreme heat in parts of the world. So definitely El Nino exacerbates this condition. So let's see the next question and last question for the day. With reference to the bacteriophages, which of the following statement is are correct? Correct बताना है हमें. ठीक है, तो bacteriophages are the viruses that target and kill the bacteria in our bodies. ठीक है. Next statement, phage therapy. So it is being also used as a therapy. It is a historical medical practice that has been widely adopted in East European countries, यानी countries beside USSR and Russia. Phages are harmful to the human cells and can cause viral diseases. ठीक है,
तो here only 1 and 2 are correct. Okay, so D is the correct answer to this question. 3 cannot be correct because it is being used as a therapy. So therapy is never harmful to the human cells. So that's why statement 3 is wrong. Let's see the description part, आपको और अच्छे से clear हो जाएगा. So here is the explanation. So 1 and 2 is the correct answer. Bacteriophages, also known as phages, are specialized viruses that infect and replicate विद इन बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को और उनको उसमें और रेप्लिकेट होते चले जाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस. ओके, दे डिसमेंटल द बैक्टीरिया as they have the unique capability to recognize and attach to a specific bacteria. Once attached, phages inject their genetic material into the bacterial cell, effectively taking over its machinery and forcing it to produce new phages particles. तो बेसिकली वायरस की जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसमें एंटर किया वायरस ने, ठीक है, और अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया का खुद का एग्जिस्टेंस टूट जाएगा एंड नए नए फेजेस बनने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स. And this is what if it is being used as a therapy, तो इसको हम phase therapy बोल देते हैं. And it has been historically being used in the Soviet era Russia and continues to be used in Georgia, Ukraine and Russia. While some Western countries are beginning to explore phase therapy, it is not yet widely adopted. ठीक है. And third statement is wrong because these are harmless to the human cells as they target बैक्टीरिया ओनली. दे डू नॉट कॉज वायरल डिजीजेज लाइक इन्फ्लुएंजा, HIV और कोविड. ठीक है, कोई भी इसकी वजह से बीमारी नहीं होती. सो इट इज़ बीइंग कॉल्ड द गुड वायरस एंड अल्टरनेटिव थेरेपी टू द एंटीबायोटिक्स. ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन सी देर आर सम फैक्ट्स. 10 to 100 टाइम्स मोर फेजेज ऑन अर्थ दैन बैक्टीरिया दैमसेल्व्स. तो मतलब बैक्टीरिया जो बीमारी करते हैं उससे ज़्यादा बीमारी सही करने वाले ये जो एजेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट. So this particular name was coined by Felix de Herel in 1917, and this phage therapy was first demonstrated to cure the Salmonella virus in poultry in 1919 and has been used as a medical treatment for humans also. Modern phage therapy in crop agriculture has already been approved in some of the countries. ठीक है, and using a cocktail of phases would make it less likely that bacteria would develop resistance to all. तो these are जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया किलर्स, उनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दीज डेज. ठीक है, तो यहाँ पे इट सेज कि वाई शुड बी प्रेफर यूजिंग फेजेस बिकॉज अनलाइक एंटीबायोटिक्स फेजेस आर हाईली स्पेसिफिक. they quickly evolve also, co-evolve to overcome any resistance in the bacteria they infect. ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहा है किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, फेजेस भी उसके साथ साथ इवॉल्व कर जाते हैं. तो और इसके बजाय एंटीबायोटिक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो दे आर द टॉक्सिक substances. They disrupt the animal's microbiome and phases are naturally found in animals and are better tolerated. तो basically naturally occurring thing है to cure the diseases, that's why it should be prominently used. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसी phases की बात हो रही है. And phases self replicate, so treatment could involve just a single dose. ठीक है, आप खाली एक डोज इसका इंजेक्ट कर दो बॉडी में एंड सारा काम ये खुद कर लेंगे, खुद से और ज़्यादा खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे. तो वी डोंट नीड टू मैन्युफैक्चर इट ऑन अ लार्ज स्केल. आप थोड़ा ही बनाओ और बॉडी में इंजेक्ट करो, या अपने आप ही अपना काम कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पे अफ्रीका के बारे में भी बात हुई है कि अफ्रीका कुड डेवलप इट्स ओन फेज बैंक्स, प्लेसेस टू स्टोर एंड प्रोवाइड फेजेस फॉर टेलर्ड ट्रीटमेंट. ठीक है, तो फेज बैंक्स बनाने की भी अफ्रीका में इसमें बात हुई है. तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियोफेजेस. And that's all for the day. Hope you like the selection of the questions and hope you like our initiatives of master series for UPSC mains and as well as this daily current affairs quiz. Keep liking, sharing and subscribing us, and you can leave your feedback in the comment section. Thank you and have a nice day.